हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लिस्ट इन पाइथन। और लिस्ट अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम प्रोग्रामिंग परस्पेक्टिव इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। सो लिस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स दैट वी आर सपोज टू नो अबाउट द लिस्ट। अभी तक वी आर वेरी कंफर्टेबल विद द वर्ड कॉल्ड एज म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। हमें पता है कि कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिसमें डेटा आप चेंज कर सकते हैं और कुछ में आप नहीं कर सकते हैं वंस यू हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। सो लिस्ट इज वन ऑफ दोज डेटा स्ट्रक्चर्स विच इज म्यूटेबल। इसमें हेट्रोजीनस डेटा आप डालते हैं, लेकिन डेटा ऑर्गेनाइज मैनर में इसीलिए हम कहते हैं स्टोर होता है बिकॉज एक्सेसिबिलिटी होती है थ्रू द इंडेक्स नंबर विच गोज इन द कंसेक्यूटिव ऑर्डर। सो जो पहला एलिमेंट स्टोर होगा दैट विल बी एक्सेस यूजिंग the zeroth memory location, and first the next value or the next consecutive value which is stored in the list will be again after 0 it will be 1 and then 2 and then so on. So therefore we say that the data is stored in the organized manner. Every item that you have in the list is basically called as its element, and the memory location using which we are allowed to access the element in the list is basically called as the index number. Okay, and remember that the index number is always starting from 0, which is again very much standard in a lot of other programming languages also. और हमारे पास list के अंदर किसी भी तरह का हम डेटा स्टोर कर सकते हैं. वी कैन स्टोर एनी अदर काइंड ऑफ data structure. It can be another list, it can be another dictionary, it can be a tuple, it can be a string, it can be a number. Okay, और सबसे important चीज़ है कि जो elements होते हैं हमारे लिस्ट के अंदर दे आर स्टोर्ड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट. सो अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें लिस्ट के, तो लिस्ट के एग्जाम्पल्स देखिए कि ये एक लिस्ट है एल जिसके अंदर हमारी वैल्यूज़ 12, 45 ये सारी वैल्यूज़ हैं ऑफ वन टाइप, लेकिन इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू नीड टू स्टोर ऑल द वैल्यूज़ of the same type. You can always store the data of different types. Like जैसे second example है, इसमें सिर्फ string values हैं. Third में there is a floating point of value because you're having the values with the decimal point. But if you now see the next example, here we have heterogeneous data. So we have a string value, we have a floating value, we have an integer. अब इसी तरह से हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें इट्स नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ सो एवरी आइटम इज बेसिकली अ डिक्शनरी एंड इट्स अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी. ओके, सो वेयर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज R12 and AVY, the second element is R13 and Neha, and so on. इसी तरह से another example that we have shown you where here it's a nested list. So in the first location you're having the value 0 to 4 in the second one. So ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक आपको सिर्फ एक आइडिया I wanted to give you that this is a way basically a list is created. So if we just start with that, so how do we write a list? Just give any name to the list, use a square bracket and start typing the values. And when you write this, so just remember that when I'm trying to print the first value in the list, always remember this is access using the index number, where the index number is given in a square bracket. So if I say 0, just remember that that 0 value is stored, the value which is stored at the 0th index number is 67. Similarly, if I'm saying comma L1, it is stored, it's storing the value 671, which means since it's going in the organized fashion, that is why we say that the data is stored in the organized manner. So if I try to execute this, I have the value 67 and I have the value 671. All right, now this is basically a simple declaration of a list. Now another, since we are having, these are all iterable ऑब्जेक्ट्स. सो आइटरेबल क्या होते हैं? जिनकी हर एक वैल्यू को हम एक सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं. सो अगर इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, और ऑब्वियसली वो सारे जो डेटा स्ट्रक्चर मल्टीपल वैल्यूज लेते हैं उन्हीं को हम आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, बिकॉज वी आर इट इज़ अलाउिंग अस टू एक्सेस मोर देन वन वैल्यू. जैसे 67 एक वैल्यू हो गई, 671 दूसरी वैल्यू हो गई, 56 थर्ड वैल्यू हो गई, एंड सो ऑन. अब इनको अगर हमारे को एक्सेस करना है तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना प्रिंट कमांड के साथ कॉमा कॉमा करेंगे. सो रादर वी विल गोना यूज द लूप. सो व्हाट इज अ सिंपल वे ऑफ ट्रैवर्सिंग इट? वी सिंपली से
I in, just give the name of the list, right, L. So one by one the element will be extracted from L, it gets stored into I, and when you try to print I, it will be printed. Okay, so one by one in different lines. So if I try to execute this, you'll see that the 4 values are getting printed one after the other. So that's one of the things. अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये लिस्ट इस तरह से हो. अगर हमारे पास ये लिस्ट इसकी जगह स्ट्रिंग के फॉर्म में होती है, जैसे ABC, comma XYZ, and then I have PPL and so on. So when I do that, this entire thing is taken as one element. So that entire thing goes into I and that gets printed. So when I try to execute it, I can have this. I can at the same time also say, if you remember strings में हमने len function किया था, जो of course हम इसमें भी करेंगे list के अंदर. So if I need to know how many letters are there in every the element of the list which gets stored in I. So this is how you do that. And when you try to execute, it will going to say 3 because इसमें 3 है. इसी को हम 1 यहाँ पर हम ई कर देते हैं तो हमारी जो आंसर है वो डिफरेंट हो जाएगा. So this concept is basically called as traversing. All right. So let's see what we have done है traversal. जो अभी हमने just पढ़ा है, that when you're accessing the elements, it's basically called as traversing. और traversing के कुछ examples जैसे मैंने भी आपको बताए थे कि if you are having a list, so उस list में एक एक element को कैसे extract करते हैं and you will going to get. अच्छा, दूसरा example जो मैं आपको बताऊंगी, इसके अंदर list नहीं है, इसके अंदर एक पूरी string है और strings हम already कर चुके हैं. So I just wanted to tell you the difference between the two. So इस case में basically आपके पास एक स्ट्रिंग है, लिस्ट नहीं है. सो व्हेन यू यूजिंग इट इन द लूप फॉर आई इन एल, इसका मतलब होता है कि एक एक करके एलिमेंट, बिकॉज ये भी एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, और एक एक करके स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर कैपिटल ए है वो आई में जाएगा, फिर कैपिटल आर आई में जाएगा, एंड दैट विल बी चेक्ड वेदर इट इज पार्ट ऑफ द वोवेल और नॉट. एंड इफ इट इज not part of the vowel, then it will be printed. So this is how it is getting printed, but ये square bracket हमने print command के अंदर use किया हुआ है, इसलिए it will be showing. So basically there are so many ways of displaying the same output. Okay, now let's see what are the other operations which are possible with the list. देखिए concatenation हमारा पहला operation होता है. Concatenation word का मतलब होता है कि हमारे को यहाँ पे अगर हमारे पास दो लिस्ट हैं, सो मैंने लिस्ट के अंदर लिखा 12,13, और अब कॉन्कैटिनेशन एक ही ऑपरेटर होता है प्लस जो आप ऑलरेडी कर चुके हो ऑलरेडी स्ट्रिंग्स के अंदर या आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस में भी. सो कॉन्कैटिनेशन एक तो स्ट्रिंग में काम करता है. दूसरा, अगर हमारे पास लिस्ट है, सो वेदर इट वर्क्स with the list or not, is that's what we will going to see. So if I say b is equal to l plus l3, so and if I would like to print the value of b, and we will just check, so that means the concatenation operator is basically हमने क्या किया यहाँ पे L1. all right, so यहाँ हमने L1 किया. so now the concatenation operator definitely works. so वो क्या करता है, जो एक नया b which is a new data structure gets created, which is another list only, which takes the first two elements of the first list L और वो as it is यहाँ पे store कर देता है. और जो second list है जो आपने सिर्फ उसके साथ attach करी है, जैसे strings में concatenation होता है, addition नहीं हो रही है इसके अंदर, वो उसी लिस्ट के पीछे as two more elements आके attach कर देता है. So when we try to say what is the length of L, it is 2. What is the length of L1, it is 2. But what is the length of B, because there are total of 4 elements that we are having. So you're supposed to remember, list हमेशा list के साथ concatenate होती है. Always remember this. अगर हम list के साथ एक number concatenate करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा एक type error आएगा जो allow नहीं करता है. So you will going to see the type error, and that's what you're supposed to remember. So concatenation means when you're using a plus operator and you're generating another list from the given two list. So if you have two lists like this, just use a simple plus sign and this is what you will going to get. Similarly, there is another list, but this time the two lists are having two different types of data. First list में red और orange है, second list में ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जैसे आपको पता है कि लिस्ट एक हेट्रोजीनस डेटा बनाती है. तो इसीलिए हमारी जो नई लिस्ट होगी L3, दैट विल बी लाइक दिस. नाउ थर्ड एग्जांपल, कि अगर आप एक लिस्ट
ऑब्जेक्ट को आप एक इंटीजर वैल्यू के साथ ऐड करेंगे, दैट इज नॉट अलाउड एंड यू विल गोइंग टू सी द टाइप एरर. द नेक्स्ट ऑपरेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ रेपिटेशन. देखिए रेपिटेशन स्ट्रिंग्स में भी हमने पढ़ा है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज़ को. सो रेपिटेशन, इससे पहले कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, पहले मैं आपको एक दिखा देती हूँ ऑपरेशन. सो अगर मेरे पास एक लिस्ट है, सो इफ आई से बी इज इक्वल टू एल, अच्छा उल्टा कर देते हैं, L1 प्लस एल, ताकि आपको ये चीज़ अब याद रहेगी कि आउटपुट इसका कैसे आया था, उल्टा आंसर आ गया. ठीक है, अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं इनटू 2. सो लिस्ट के अंदर रेपिटेशन पॉसिबल है जो एक लिस्ट ही जनरेट करेगा. सो व्हेन आई से b इंटू 2 एंड आई ट्राई टू प्रिंट इट, जस्ट सी दैट these are the four elements that I was having in the list. So ये four elements पहली बार repeat हुए और फिर दूसरी बार repeat हुए. So that is happening like 2 times and the final answer is also a list. So you're supposed to remember that repetition is possible using a multiplication operator, and you can always do that. It's just that it will going to repeat the list and regenerate a new list, which means if I say g is equal to b into 2 and then I print g, that means there is another list which gets created with that. So if I try to execute it, it's the same answer, but this time the name has been given to this list which is called as g. So that's what you're supposed to remember, and that's what we have even shown in the example also, कि हमारे पास अगर एक लिस्ट है और उसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ L1 को 3 टाइम्स, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर 3 बार रिपीट होके आ रहा है. इसी तरह से सेकंड टाइम अगर हम कर रहे हैं और L1 में, बट आप याद रखेंगे कि जब भी हम रेपिटेशन यूज़ करते हैं तो फिर से वही बात हो जाएगी कि आप लिस्ट मल्टीप्लिकेशन में हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी. सो ऐसा नहीं कि अब आप 2 लिस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 लिस्ट को आप सिर्फ कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, लेकिन 2 लिस्ट को आप, जैसे थर्ड एग्जांपल में मैंने बताया है कि यू कैन नॉट मल्टीप्लाई 1 लिस्ट विद another list. Okay, so you will again going to get a type error because उसको समझ में नहीं आएगा ना. अगर आपको भी मैं ये सिचुएशन दूँ तो आप क्या आंसर दोगे कि मैं एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ कैसे मल्टीप्लाई करूँ. तो आप मल्टीप्लिकेशन तो एक नंबर के साथ ही कर सकते हैं ना. सो दैट्स व्हाट यू आर सपोज टू रिमेंबर, बिकॉज ये चीज़ें लॉजिकल हैं. जो चीज़ आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं और सोच सकते हैं, सिस्टम भी वही कर सकता है. नेक्स्ट वी हैव इज द मेंबरशिप ऑपरेटर. और मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे इन और नॉट इन है, लेकिन इन हम अभी जैसे मैंने पीछे वाले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि हमारे पास अगर एक लिस्ट है, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें और हमें चेक करना है कि वैल्यू a इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट. ओके, सो यू राइट इफ a in L and a is 12, now 12 is existing, therefore your answer will be present. अब ये वाला एग्जाम्पल हम ऑलरेडी स्ट्रिंग्स के साथ भी कर चुके हैं. सो इफ आई हैव अ स्ट्रिंग एंड आई एम ट्राइंग टू यूज नॉट इन ऑपरेटर, तो एक मैंने लिस्ट के साथ आपको एग्जाम्पल बता दिया, दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको स्ट्रिंग्स के साथ बता दिया. सो you just take a character and you will check whether it is a vowel or not. All right, so if suppose you enter the character and the character is s, obviously you are going to get it's not a vowel accordingly. So membership operator basically आपका इस concept के साथ यूज होता है. अब एक बहुत ही interesting operator है which is called as the assignment operator, और वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है लिस्ट के साथ. देखिए अगर मेरे पास 2 लिस्ट हैं और मैंने तीसरी लिस्ट g बनाई, ओके, g की वैल्यू मुझे पता है ये है. Okay, so let me just copy paste this so that you remember that. Let me have it in the form of the comment, and this is what I have. So if I have this particular list, just see what I do. I create another list h and I say h is equal to g. जैसे ही आप एक और लिस्ट बनाते हैं एंड यू से h इज इक्वल टू g, तो प्लीज अब आप याद रखेंगे कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अनदर लिस्ट बाय यूजिंग एन असाइनमेंट ऑपरेटर, इट्स नॉट अ सेपरेट कॉपी ऑफ द लिस्ट विच गेट्स क्रिएटेड, बट एक ही लोकेशन को आपने 2 नाम दे दिए, h एज वेल एज g. इसका मतलब है आप उसको रेफर कर सकते हैं h से या आप उसको रेफर कर सकते हैं g से. एनी चेंजेस दैट यू आर मेकिंग इन आइदर ऑफ देम विल बी रिफ्लेक्टेड इन द अदर वन. आई विल जस्ट शो यू दैट. सो इफ आई से प्रिंट h and I execute my program, it is same, but so answer same आया. But now if I try to say h of 3 which is 0 1 2 3 23 है is equal to 999.
Now if I try to say print H and print G, ठीक है, सो H ने वैल्यू कहाँ से ली, G से, लेकिन मैंने आपको बताया जैसे ही आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं वो ऑब्जेक्ट जो है मतलब आपने एक ही लोकेशन के दो नाम दे दिए, so changes will be reflected back. Now if I try to execute either of them, so just see 999 is coming at this position, 999 is coming at this position. Okay, so I hope this part is clear to you, and always remember it never makes a copy, it makes two variables pointing to the सेम लोकेशन. सो एक जगह का आपने दो नाम दे दिया, जैसे इसमें एग्जांपल मैंने दिया प्रिंट L1 एंड L3, तो हमारा आंसर सेम आएगा. सेकंड केस में भी अगर हम असाइनमेंट यूज करते हैं और मैं L1 को चेंज करती हूँ लेकिन मैं दोनों को प्रिंट करेंगे हम लोग L1 as well as L2, I will see that the changes are reflected back. Take the third example also. If I'm trying to add an element यूजिंग, देखिए अपेंड फंक्शन हम आगे करेंगे बट मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देना चाह रही हूँ कि अपेंड फंक्शन यूज करता है और यूज करेंगे हम आगे, विच इज बेसिकली यूज टू एड एन एलिमेंट और द आइटम इन द लिस्ट. ओके, सो हमने L1 डॉट अपेंड में 98 हमने ऐड कर दिया एट दी एंड, सो L1 के लास्ट में ऐड हो गया. जैसे ही वो ऐड हुआ तो हमारा आंसर हो गया 12, 13 एंड 98 फॉर L1. लेकिन क्या ये चेंज रिफ्लेक्ट होगा L3 में? यस. सो यू विल गोइंग टू सी द चेंजेस गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन बोथ द ऑब्जेक्ट, बिकॉज लोकेशन एक ही है, सिर्फ उसके नाम दो हो गए हैं. So I hope you've understood the first section of the list and you know how to traverse now and the different operators like concatenation, repetition, membership and assignment. So children, if you've liked my video, please do press the like button and keep following for the next consecutive videos on list, which I will be sharing very soon. Have a lovely day.